क्या हमें आसपास के लोग बहुत जजमेंटल लगते हैं कि दे आर कॉन्स्टेंटली जजिंग अस? तो जैसे मैंने सोचा है इसके बारे में, एक्चुअली हमें बहुत बारी पता नहीं होता कि वेदर दे आर जजिंग अस और नॉट, बट वी जज देम टू बी जजमेंटल. Okay, so essentially we are judging them to be judgmental. Judgmental, we know it's a negative thing. कि अगर कोई judgmental है तो it's a negative thing. हम उनको सोच रहे हैं कि वो judgmental हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें judge कर रहे हैं कि ये judgmental है, कि ये negative है in some way. Of course, we may have our reasons to judge that way, but in any case, it's a judgment. It's not a fact. Now, there could be several reasons we are judging them. One is that we have seen them judge others, or we see their expressions. Right? एक तो है कि हमने उनको देखा है, दूसरों को जज करते हैं, तो हमें क्यों छोड़ेंगे. Secondly, हम उनके expression, gesture से हमें लग रहा है कि they are evaluating us, they are judging us. Third reason ये होता है कि अगर मैं बहुत लोगों को जज करता हूँ तो नेचुरली मैं यही सोचूंगा कि लोग भी मुझे जज करते हैं. आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो अंदर से ही ऐसा होता है कि देयर इज सम कंसिस्टेंसी कि अगर मैं सोच रहा हूँ, मैं जज करता हूँ, तो मैं लोगों को भी जजमेंटली समझूंगा. तो आई थिंक ये 3 रीजंस हैं कि हमें लोग जजमेंटल लग सकते हैं. कि मैं इतना जजमेंटल हूँ तो नेचुरली मुझे आसपास के लोग जजमेंटल लगेंगे. अगर मैंने उनको देखा है किसी को जज करते तब भी लगेंगे. अगर यहाँ उनके एक्सप्रेशंस वगैरह से भी आई गेट अ सेंस. अब लेट्स से पहली बात तो if it's a judgment, then we don't know for sure whether they are actually judging us or not. Secondly, if they are indeed judging us, so what? Why are we afraid? They are going to judge us. Because when they judge us, we'll be hurt. That's why we are afraid. Why are we hurt when they judge us? Because when they judge us, they consider ourselves inferior in some way. They consider ourselves deficient. That is painful. But why is that painful? अगर वो हमें deficient समझ रहे हैं, वो हमें समझ रहे हैं कि सही नहीं है, तो हमें क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें constant दूसरों की acceptance चाहिए to have self acceptance. हम constantly we are seeking validation. Validation means we are looking for reasons to accept ourselves. तो जब वो रीजंस नहीं मिलते हैं, उसके उल्टे रीजंस मिलते हैं, then we reject ourselves, we don't accept ourselves, then क्योंकि हम अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं तो अंदर बहुत नेगेटिविटी हो जाती है. क्योंकि we don't want to live with ourselves, right? कि हम अपने साथ ही जीना नहीं चाहते क्योंकि हमें पसंद नहीं है हम. we are rejecting ourselves. So that is painful. So this is what is painful. तो दूसरों की जो रिजेक्शन होती है, दूसरों की जो जजमेंट होती है, दूसरों की जो असेसमेंट होती है कि हम डेफिशिएंट हैं, दैट ट्रिगर्स आवर सेल्फ जजमेंट, आवर सेल्फ रिजेक्शन, एंड दैट इज पेनफुल. उसको अवॉइड करने के लिए वी आर कॉन्स्टेंटली वरीड कि दूसरे में जज तो नहीं कर रहे. वी डोंट रियलाइज कि इवन इफ अदर्स जज अस, वी नीड नॉट बी हर्ट इफ वी डोंट रिजेक्ट आवरसेल्व्स. इफ वी सराउंड आवरसेल्व्स विद सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, यार I'll consider myself worthy, I'll consider myself lovable. मैं अपने आप से प्यार करूँगा, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूँगा regardless of what others think of me. Then others' perceptions are not going to impact me. If this doesn't happen, I constantly look for reasons to reject myself. If my relationship with myself is hostile, कि मैं हर छोटे रीजन पे अपने आप को रिजेक्ट कर सकता हूँ, then I'll be constantly worried about what people think of me. क्योंकि जैसे ही मुझे लगेगा कि they don't think good of me, they think I'm deficient in some way, I'll have a reason to reject myself, and that's going to be painful. So I live my whole life in this worry. So this circle will go on and on and on. Again, this is the reason why we are afraid of other people's judgments. Now, coming back, we judge others to be judgmental. Even if they are judgmental, so what? This is just one aspect of them, right? कि ठीक है वो judgmental है, ये चीज़ उनकी शायद अच्छी नहीं है, पर उनकी और चीज़ें अच्छी होंगी. I can focus on those positive aspects of them. वो तभी हो पाएगा when I'm not deeply hurt by their judgment.
if I get into suffering, जैसे वो मुझे जज करते हैं वैसे ही I start suffering significantly, then I don't even have the bandwidth, I don't even have that mental space to focus on any positivity. But if I accept myself, if I love myself, तो फिर उसमें क्या होगा कि हाँ ठीक है वो जज कर रहे हैं, that's some negativity, but then I'll also have mental space to focus on their other positive aspect. ठीक है ये negative है but और positive चीजें भी हैं, तो we need not define that person by that person's currently judgmental attitude. अगर वो जज कर भी रहा है तो that doesn't define that person, right? पर वो तभी हो पाएगा if I'm not suffering enough. If I'm suffering enough, तो क्या होगा, then I'll look for the source of suffering and I'll want to eliminate that source of suffering. तो मुझे लगेगा कि वो ही मेरा source of suffering है, तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ वो ना हो, right? तो naturally अगर वो मेरा source of suffering है, पहली बात तो जो भी aggressive behavior होगा and all that, depending upon क्या power equation है, if that person is at the same level or has less power than me, then I can be very aggressive also. But अगर वो मेरे से ज़्यादा power और काफ़ी ज़्यादा power है, then perhaps I'll not be aggressive, I'll just be defensive. Whatever is the case, if I'm suffering because of that person's judgment, then I have only suffering to share. अगर मैं सफ़र नहीं कर रहा हूँ, and सफ़र ना करने का I think मुझे जो तरीका समझ आता है वो यही तरीका समझ आता है that there is enough self-acceptance, self-love within, कि दूसरे की rejection doesn't penetrate us. If that happens, then first of all I'm not suffering. Secondly, then I have a mental bandwidth to focus on that person's positivity also. ठीक है ये negative है, there are other positive aspects. Of course, I can also ask the person to not carry on with this level of negativity, but I'll be more gentle, I'll be more considerate of other person's emotions. If I'm not hurt, if I'm hurt और मैं सोच रहा हूँ कि वो मेरी source of suffering है, तो फिर मैं considerate होना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए gentle होना बहुत मुश्किल है, then I'll be aggressive, फिर मैं उसको hurt करूँगा, फिर वो मुझे hurt करेगा, and the circle will go on. But if I'm not hurt, that circle has not even started. Yeah, start हुआ है उसकी तरफ से, but I'm not letting it continue. Then I can ask the person to be less negative or to relinquish negativity as much as he can in a very gentle way, and probably I may not even advise that person to do it while he is negative. Because जब वो negative होता है, then a lot of times the person is not even receptive to any advice, any feedback. The person is just नेगेटिव होने का रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं वो हर्ट है, राइट? वो भी अपनी सफरिंग ही शेयर कर रहा है मेरे साथ इंसान पे, तो वो पर्सन अभी सफ़र कर रहा है, तो प्रॉब्ली ही नीड्स लॉट ऑफ कंपैशन, एम्पैथी एट दैट टाइम, नॉट रियली एडवाइस, क्योंकि उस टाइम पे एडवाइस भी उसको लग सकती है, दैट्स ऑल्सो जजमेंट. उसको लगेगा अच्छा मुझे एडवाइस दे रहा है, मतलब ये समझता है कि मैं बकवास बंदा हूँ, कि मुझे चेंज करना ही पड़ेगा तभी आई विल बिकम एक्सेप्टेबल. तो एडवाइस कैन एक्चुअली वर्क अगेंस्ट you in those moments, क्योंकि सामने वाला may take advice as another form of judgment. So when the other person is hurt, what works is empathy, compassion. पर वो तभी हो पाएगी when we are not hurt. If we are hurt, we are suffering, then we don't even have that level of positivity to bring compassion and empathy to the situation. So first is कि हाँ we don't need to judge others to be judgmental, और अगर वो जज कर भी रहे हैं हमें, that's their mistake. We are great the way we are. We are complete the way we are. Of course लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी, हमें जो लगेंगी करेंगे धीरे धीरे, but we are worthy the way we are. We are not an entity which is to be evaluated. We are a human being who is to be cherished, who is to be loved, right? So if we live in that mode, even if others judge us, it won't impact us, and will not focus on their judgmental attitude. We'll focus on their overall personality and not let one negativity define their whole persona.